Good morning, students. This is chapter number 16, water. So since we know that water is very important for us, water is present in three different forms, that is solid, liquid and gaseous. Water is present in abundance, but it's still scarce. Why it is scarce? Because 97% of all water on our earth is present in the ocean and the seas. Only 3% of water on our earth is fresh water. तो पीने के लिए तो सिर्फ 3% वाटर ही अवेलेबल है. Due to increase in population, the demand for usable water has increased, whereas its availability has decreased. So in last classes, we had learned about the availability, importance and the uses of water. We tend to think of water as a very common and easily available substance. We are therefore often not very careful about using it judiciously. However, we all know and realize the importance of water in our daily life. In fact, it is the presence of water on our earth that is one of the main reasons for the survival of all the forms of life on the earth. Obviously, water है तभी हमारी sustainable life possible है, यहाँ पर existence हमारी possible है, otherwise we will not survive, we will die. So here you are having the activity 1. Yes. Write 10 uses of water in daily life. So this is the activity for you. Write down yourself 5 activities. कहाँ कहाँ पर आप पानी का, ठीक है, वाटर का कहाँ यूज़ करते हो. तो ये 10 है, आपको अपने आप करना है. ठीक है, 10 यूज़ लिखने हैं वाटर के. ओके, आफ्टर दैट वाटर ऑन अर्थ. Yes, water is present in all its three forms: solid, liquid and gaseous. Water vapor on the earth. Water is in liquid form, is available in ocean. अभी मैंने आपको बताया, ocean, sea, river and lakes and ponds on the surface of earth. It occurs in frozen form on polar ice caps and glacier. Its gaseous or vapor form is present in air that surround us. ठीक है, तो वाटर मेनली आपकी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम जो पानी पी रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? लिक्विड स्टेट में. बट ग्लेशियर की फॉर्म में, पोलर आइस कैप की फॉर्म में कहाँ पर अकर करता है? फ्रोजन. ठीक है, फ्रॉम पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर में मिलता है. ठीक है. वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस बट इट इज स्केर्स. कितना ज़्यादा पानी है बट तब भी इसकी कमी है. अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन ओशियन एंड सीज. दिस वाटर इज वेरी सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड अप फॉर आवर डेली नीड्स. तो क्वेश्चन आ जाता है कि जब इतना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है तो वाई वी कैन नॉट यूज़ इट. तो आप इसका रीज़न दोगे, because that available water is very salty and cannot be used for daily needs. Only 3% of water on our earth is fresh water, which is good for human use. Only 3%. Most of this fresh water, however, occur as snow in form of glacier and ice caps or as water vapor in the air. Some amount of fresh water is present as groundwater. This may be used for some purposes, but it is often not readily available. It is only 0.3% of the fresh water present in rivers, lakes and streams that is readily available for use. The following diagram illustrates this. You can see the diagram. Yes, this yellow portion, 97 ocean and seas. Yes, this gray box, 2%
ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। 97 देखो आपका ओशियन और सीज में, ओनली 2% ग्लेशियर, दिस ग्रे बॉक्स, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स में प्रेजेंट है। दिस ब्राउन pie diagram you can see, only 0.7% ground water not readily available, ये आपका ground water level है। And this blue box 0.3% that is present in rivers, lakes and streams, ठीक है। So this diagram clears you the availability of water, ठीक है। After that, local sources of water. Earlier there was no proper system of water supply. People had to fetch water from rivers, lakes or ponds. Even today at some places people have to travel long distances to fetch water on their daily needs, ठीक है। तो पहले अर्लियर क्या था आपका, वाटर की जो अवेलेबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी। पीपल हैड टू फैच वाटर के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था, रिवर, पॉन्ड और वेल से वो वाटर लेकर आते थे। काफ़ी डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ता था पानी के लिए। वी ऑल नो दैट इन सिटीज़ वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द सिविल एजेंसी। वाटर फ्रॉम रिवर और लेक्स इज प्योरिफाइड in water treatment plants and is then supplied throughout a network of pipe to our homes, offices and schools, ठीक है। तो आपका जो वाटर है सिटीज़ में, वाटर फ्रॉम जो रिवर से है, लेक से, उसको क्या किया था, प्योरीफाइड किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स में, और फिर उसको क्या किया घरों तक पहुंचाया जाता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। So these are the local sources of water. After that, ground and water table. Yes, most of the rainwater and water from the rivers and ponds seep through the soil and goes underground. This water is trapped in a space between the underground rocks. The upper layer of this water is called water table. The water below this layer is known as ground water, ठीक है। तो आपका जो बारिशों का पानी है, मोस्टली जो आपका इम्पोर्टेंट वाटर है, वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड्स में चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। तो जो वाटर लेयर है, अपर जो लेयर है वाटर की, दैट इज सेड टू बी योर वाटर टेबल। यू कैन अंडरलाइन दिस, दैट इज सेड टू बी योर वाटर टेबल। और वाटर बिलो दिस लेयर इज सेड टू बी योर ग्राउंड वाटर। तो ये सीप्स हो जाता है ग्राउंड में, वाटर ऑफ रेन्स। ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स एंड इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एज वेल एज आवर डेली नीड्स, ठीक है। तो ट्यूबवेल के थ्रू, हैंड पंप के थ्रू ये वाला पानी ग्राउंड वाटर को ऊपर लेकर आया जाता है और अपने डेली नीड्स के लिए यूज़ किया जाता है। वी नो दैट नियरली 3/4 of the surface of earth is covered with water. Then why do we face shortage of water? Let us try to understand this. So we will discuss this next time, scarcity of water. So this is all about today. Read and understand the chapter. Thank you and have a nice day.